press event, and to begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency, राष्ट्रपति मोहन, Your Excellency, President, यहाँ उपस्थित सभी डेलीगेट्स और फ्रेंड्स मीडिया, राष्ट्रपति मून की भारत की पहली राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करना मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। लगभग 1 साल पहले मैं पहली बार राष्ट्रपति मून से हैम्बर्ग में G20 समिट के समय मिला और उस समय मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। आज पूरा विश्व कोरियाई प्रायद्वीप में हो रहे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने व्यस्त समय कार्यक्रमों के बीच भारत की यात्रा के लिए समय निकाला है और इसलिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, शायद कम ही लोग जानते हैं कि भारत और कोरिया का संबंध एक प्रकार से पारिवारिक संबंध है। सदियों पहले अयोध्या की एक राजकुमारी प्रिंसेस सूरीरत्ना की शादी कोरिया के राजा से हुई थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी कोरिया में लाखों लोग अपने आप को उनका वंशज मानते हैं। आधुनिक काल में भी भारत और कोरिया का मजबूत संबंध रहा है। कोरिया में युद्ध के समय भारत की पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के काम की सराहना आज भी होती है। फ्रेंड्स, कोरिया गणराज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति विश्व में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। कोरिया के जनमानस ने दिखाया है कि यदि कोई देश एक समान विजन और उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध हो जाता है तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कोरिया की यह प्रगति भारत के लिए भी प्रेरणादायक है और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कोरिया की कंपनियों ने भारत में न सिर्फ बड़े स्तर पर निवेश किया है बल्कि हमारे मेक इन इंडिया मिशन से जुड़कर भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। कोरियाई कंपनियों ने क्वालिटी के प्रति अपने कमिटमेंट से कोरियाई प्रोडक्ट्स के लिए भारत के घर घर में अपनी पहचान बनाई है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बातचीत में हमने न सिर्फ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रिव्यू किया बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी खुलकर साझा किए। मैं समझता हूं कि नीतिगत स्तर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कोरिया गणराज्य की न्यू सदर्न स्ट्रेटेजी में स्वाभाविक एक रास्ता है और मैं राष्ट्रपति मून के इस विचार का हार्दिक स्वागत करता हूं कि भारत और कोरिया गणराज्य के संबंध उनकी न्यू सदर्न स्ट्रेटेजी का एक आधार स्तंभ है। हमारी बातचीत के परिणाम स्वरूप एक विजन स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। हमारा फोकस अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर है। इस रिलेशनशिप का एक स्तंभ हमारे आर्थिक और व्यापारिक संबंध है। आज कुछ देर बाद हम दोनों देशों के प्रमुख सीईओ से भी मिलने वाले हैं। मुझे आशा है कि हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स को और मजबूत करने के लिए हमें उनसे अच्छे सुझाव मिलेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की दिशा में आज अर्ली हार्वेस्ट पैकेज के रूप में एक ठोस कदम उठाया है। अपने संबंधों के भविष्य और विश्व में हो रहे रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस को देखते हुए हमने साथ मिलकर इनोवेशन कोऑपरेशन सेंटर्स की स्थापना
और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ग्रुप का गठन करने का भी निर्णय किया है। फ्रेंड्स, कोरियाई प्रायद्वीप की शांति प्रक्रिया को गति देने का, उसे ट्रैक पर रखने का और उसमें प्रगति का पूरा श्रेय राष्ट्रपति मून को जाता है। मैं मानता हूं कि जो सकारात्मक वातावरण बना है वह राष्ट्रपति मून के ही अथक प्रयासों का परिणाम है। इस प्रगति के लिए मैं राष्ट्रपति मून का अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी बातचीत में मैंने उन्हें बताया कि पूर्वोत्तर और दक्षिण एशिया के प्रोलिफरेशन लिंक्स भारत के लिए भी चिंता का विषय है और इसलिए इस शांति प्रक्रिया की सफलता में भारत भी एक स्टेक होल्डर है। तनाव कम करने में जो भी सहयोग हो सकेगा हम अवश्य करेंगे और इसलिए हमने अपने परामर्श और समन्वय की गति बढ़ाने का निर्णय लिया है। सचिव स्तर के 2+2 डायलॉग और मंत्री स्तर की ज्वाइंट कमीशन की आगामी मुलाकातें इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण होगी। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति मून, उनकी धर्मपत्नी और शिष्टमंडल के सभी प्रतिनिधियों का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले समय में उनके सभी शांति प्रयासों में सफलता के लिए मैं अपनी तरफ से और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। दासी मान्नायो, गोंग सुमनिदा, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Honorable President of the Republic of Korea to deliver his remarks to the media. 예, 모디 총리님 감사합니다. 나와 우리 대표단을 따뜻하게 환대해 주신 And my sincerest gratitude to Prime Minister Modi and people of the Republic of India for the warm welcome accorded to me and my delegation. Since the G20 summit in Hamburg last July, I've come to meet Prime Minister Modi again in just 1 year. In that time, through social media, we celebrated the International Day of Yoga and continued communication with each other. Perhaps this is why I feel close to him like an old friend. For the last 2 days, we have spent much time together, having in-depth dialogues on a wide range of topics. At the Gandhi Smriti, we thought about world peace together. At the inauguration ceremony of Samsung Electronics Noida new plant, we affirmed our solid commitment to the expansion of economic cooperation between our two countries. We also took the subway together, and we were able to meet a number of Indian citizens, and we were able to solidify our friendship even further. India and Korea, for the last 45 years since establishing diplomatic ties, developed our bilateral relation in various fields. And in 2015, on the occasion of Prime Minister Modi's visit to Korea, escalated it to special strategic partnership. Now, after 3 years have passed, Prime Minister Modi is pursuing Act East policy that attaches importance to cooperation with Korea, and I'm pressing ahead with new Southern policy that takes India as Korea's key partner for cooperation. At the summit today, we shared a view that now is the right time to substantiate Korea-India Special Strategic Partnership and lift the partnership to the next level. Today, Prime Minister Modi and I agreed to promote cooperation for people, prosperity, and peace, and respond to the fourth industrial revolution so as to create engines of future growth envisioned by 3P plus cooperation in a vigorous manner. Specific measures to that end were discussed.
First, by facilitating exchange between peoples of our two countries, we decided to broaden the scope of mutual understanding and empathy. We will make mutual summit-level visits on a regular basis. To complement and support intergovernmental consultations, we agree to expand high-level consultations between the two governments. Various interactions between our governments will become a firm foundation for promoting our friendship. By means of visa simplification, such as visa on arrival facilities, we decided to work toward reducing inconveniences experienced by people. In the areas of tourism, youth, academia, and education, among others, our two sides will then endeavor to increase people-to-people exchange and carry out a diverse cultural cooperation projects. Starting this year, standard textbooks in India will carry for the first time detailed descriptions related to Korea. This was welcome news, I heard. Some 100 million students of India will now be able to learn about Korea's history of printing technologies such as Tripitaka Koreana and Jikji, and also its economic development and democratization, as well as candlelight revolution that has become the model of democracy. In fact, the Tripitaka Koreana and Jikji are the fruit blossomed by the Buddhist culture, which is disseminated by way of India. On that note, I expressed my special appreciation to Prime Minister Modi and the government of India. Secondly, by utilizing our mutual economic structure and cooperation potential, we have agreed to expand our economic cooperation. Korean companies doing business in India are living up to the Prime Minister's Make in India initiative and leading our bilateral economic cooperation efforts. Going forward, I hope that more Korean companies will invest in India so that the foundation for mutual prosperity can be further expanded. The Prime Minister and I discussed ways in which we can go beyond big companies and help foster ties between promising small to medium-sized companies and startups in our respective countries, and we agreed to promote substantial measures to encourage their cooperation. Furthermore, in India's large-scale infrastructure projects in areas such as smart cities, power generation, railroads, streets, ports, and renewable energy, highly competitive Korean companies can be encouraged to participate. And to that end, we agreed to take a keen interest in this issue and cooperate together. And based on this, we have agreed that from 20 billion to the current amount by 2030, we're going to expand our trade volume to 50 billion US dollars. Furthermore, the Prime Minister and I discussed the new Korea-India SEPA negotiations and expressed our appreciation for these efforts. We agreed to work together for the early conclusion of the negotiations. Thirdly, for peace and security on the Korean Peninsula, South Asia, and the world, the Prime Minister and I agreed to work ever closer in cooperation. I explained to the Prime Minister the Korean government's efforts and initiatives to establish permanent peace on the Korean Peninsula and expressed my gratitude to India's unwavering support. To that, the Prime Minister replied that he will continue to cooperate actively for the sake of peace on the Korean Peninsula and further reaffirmed his position. Furthermore, based on the shared values of trust and freedom, we have decided to expand our diplomatic and security cooperation. In that end, in the field of defense industries, we have agreed to also further our cooperation going forward. Furthermore, for the sake of regional peace and stability, we have agreed to strengthen our cooperation within the regional multilateral consultative frameworks, such as the East Asia Summit and the ASEAN Regional Forum. Lastly, as for the imminent challenge facing us with the fourth industrial revolution, we agreed to establish a cooperation platform to respond to these issues together. India has excellent software capabilities and a talented ICT workforce, and Korea has rich experience with expertise in manufacturing and commercialization technologies, and if we can bring these strengths together, that will further upgrade our competitive edges and our future growth engines in the fields of AI, electric vehicles, ICT, IoT, aerospace, biotechnology, and other advanced science and technology areas. We agreed to expand the cooperation of our country's research institutions. Prime Minister Modi and I have reflected the agreements and deliberations we had during the summit meeting on the Korea-India Vision Statement, which we adopted as a statement of the future vision of our bilateral relations. I hope that these specific measures can be carried out as soon as possible so that the peoples of our countries can reap the benefits. Through this state visit to India, I
I hope that we can open a new era for bilateral strategic cooperation. The regular consultations between our two heads of state will mark the starting point in those efforts. I will eagerly await Prime Minister Modi's visit to Korea in 2020. Until then, I hope we can continue our close communications in various multilateral summits and through online channels. Once again, I express my deepest gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for their friendship and warm welcome. Thank you. Thank you, Excellency. This concludes our press event. Thank you all for joining.